Good morning, everyone. I'm Ankit Goyal from Ayushi Density, and today we have Dr. Kapil Singhal with us. Sir is owner of Ekdantam Dental Clinic, and Sir is a periodontist from Government Dental College, Jaipur, and Sir passed out in 2014. He established this brand Ekdantam Clinic, and Sir has been a role model for many young dental graduates to how to fast forward your success. So we will get to know the psychology behind this, the decisions he make, and some tips and tricks that may help you. So welcome, sir. Thank you so much, Ankit. Thank you. And sir, initially I would like to know something about your journey as a dentist and what are the challenges you face and conquered in this journey. Okay, so most of the people, like मेरी भी journey was not out to start as a dentist. मेरी journey as a dentist has a very long story. So when I was starting my preparing for my graduation, I got selected for my medical in a private college. But those time pe fees were very high, and my family we were from a low middle class family, and it was very difficult for my family to pay for the huge amounts that used to be there. So I opted for a dental college, and anyhow at that time I decided कि अब मैं dental कर रहा हूँ तो I will give my best in my field. So I did my UG from a private college that was very new at that time because उसकी भी fees कम थी, so I had that thing in mind. So I did my UG from a private college, but whatever I did, I tried to work very hard during that time. Whether it was my undergraduation, I worked very hard to learn all the things. I studied a lot, and my main aim was to crack my post graduation from a government college. I didn't had an idea कि what branch, what seat, but ये था कि हाँ भाई PG करनी है किसी अच्छे government college से, and I worked day and night during my internship and post internship 1 year when I was preparing for my post graduation, and I cracked Rajasthan State PG rank 1 and other competitive That's exams, great, sir. and I got my PG in Government Dental College Jaipur, and from where basically my journey I would say in dentistry started. एक विजन बना उस टाइम पे. आई हैड ऑलवेज बिलीव्ड इन थिंग्स कि आपको जो वैल्यूज मिलती हैं अपनी फैमिली से, यू वर्क ऑन देम. आई हैव सीन माय फादर, ही वाज आल्सो अ डॉक्टर, अ जनरल फिजिशियन, बट उनको मैंने 18-18 घंटे 20-20 घंटे काम करते देखा था फॉर द पेशेंट्स. वो गांव में काम करते थे फॉर द पेशेंट्स, एंड आई यूज्ड टू सी हाउ द पेशेंट्स यूज्ड टू ट्रस्ट हिम. तो मैं और मेरा यंगर ब्रदर, ही इज आल्सो अ डॉक्टर, तो हम दोनों में ये था कि वी नीड टू वर्क हार्ड, जैसे कि हमारे फादर को हमने करते हुए देखा था. तो बचपन से ये था कि डॉक्टर तो बनना है. So but this journey started, worked very hard during my post graduation 3 years. I worked like anything. I worked from morning to evening, whatever time I used to get. I used to do all type of procedures, surgeries In college. in college, yeah. So 3 साल बहुत काम किया. That helped me out to like work outside and learn a lot of things. तो मेरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज टू ऑल द यंग डेंटिस्ट, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर पीजी, दोज हु आर इन पोस्ट ग्रेजुएशन, आई हैव सीन दे आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन, ड्यूरिंग पोस्ट ग्रेजुएशन, लॉट ऑफ पीपल आई हैव सीन दे गेट अनफोकस्ड. और है ना, वो ये सोचते हैं हमारे कॉलेज में इतना काम नहीं होता है, देयर आर इमेंस अपॉर्चुनिटीज. आपको ये देखना है आपको क्या करना है. अगर आप सीखना चाहते हो, हर जगह अपॉर्चुनिटीज हैं, एंड देयर आर लॉट ऑफ पीपल those whom you can look upon and learn. Just learn. Those 3 years, I would say, of my life shaped me how I wanted to be in my future. तो 3 साल आपको जितनी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी खुल के काम करने की, इतना बाद में उतना खुल के काम करने की अपॉर्चुनिटीज कम हो जाती है, बिकॉज वहां पे देयर आर लॉट ऑफ पेशेंस एंड देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु कैन हेल्प यू आउट व्हेन यू आर डूइंग थिंग्स. So the first thing that I did was I utilized those 3 years immensely. So best part with me was I was in a government college. I was getting good stipend, so I invested that stipend in my further learnings. मेरे को सीखने का बहुत शौक था. मैं बहुत सारे वर्कशॉप्स अटेंड करता था. मैंने कई सारे इक्विपमेंट्स पीजी टाइम में ही खरीदे, जो भी स्टाइपेंड मुझे मिलता था. सो आई यूटिलाइज माई स्टाइपेंड फॉर दैट. और उसी स्टाइपेंड से मैंने थोड़ा सा अमाउंट अपनी क्लिनिक स्टार्ट करने के लिए भी आई kept, because as I told you, I was from a
lower middle class family, so I knew my parents, I don't want to burden my parents for all those things. So this is how it started. But those 3 years of my PG were the most important time when I planned things for my future. So sir, I think there is two learning. First, आप कहाँ से स्टार्ट करते हो वो आपकी डेस्टिनी को डिसाइड नहीं करता है, बट आपका स्टार्ट भी आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा. लाइक यू डिड इन योर पोस्ट ग्रेजुएशन, आपको उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा, उसमें अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा. Very true. On the same line, sir, what is your thoughts about initial 5 years of a clinic? Because initial 5 years it's very challenging. You need to load your clinic with equipment, you are branding yourself, you are developing your client base and everything. So how a young dental graduate must think, as I would say there are 3-4 specific challenges when a young doctor is opening their clinic. First, how to get the capital for the equipments and nice beautiful clinic. Second, how to get initial footfall. Third, how to communicate with that footfall, the treatment and the charges. So there are a lot of questions. Let's take it one by one. Yeah. Initial capital investment. सबसे important चीज when you're opening a clinic ना, see आपका सबसे important चीज are patients in your clinic, है ना? Now I would ask you, I would not say कि पहले दिन ही आप you put 50 lakh in your clinic and उसके बाद क्या होगा, you will be overburdened. 50 लाख लगाया, then you will start expecting कि यार पहले साल से ही मैं 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख कमाऊं. That would be a thing that would overburden you. See, किसी भी डॉक्टर को, चाहे XYZ any speciality, a doctor बोलते हैं ना, जितने बाल सफेद होते हैं और जितना डॉक्टर पुराना होता है and जितना वो पेशेंट डॉक्टर ट्रस्ट बनता है, it takes time. चाहे आज कोई भी सर्जन, कोई भी डॉक्टर, कोई भी स्पेशलिटी का आज बहुत बड़ा बना है, इनिशियल 4 साल 5 साल उसने भी मेहनत करी है, स्ट्रगल करा है. तो इनिशियल आपको है ना, दिस इज हाउ आई ऑल्सो डिड. I won't ask any of the new dentists who are coming into the market to invest huge amounts in their clinic. Start with basics, but those basics should be the best in the in the field. सपोज अगर मैं एक अपेक्स लोकेटर खरीद रहा हूँ तो वो मैं अच्छा खरीदूंगा, मैं ये नहीं खरीदूंगा सस्ता खरीद लेता हूँ, है ना. इफ आई एम बाइंग अ डेंटल चेयर, आई विल बाय इट ऑफ अ गुड क्वालिटी, गुड कंपनी. सो वट एवर यू आर इन्वेस्टिंग, इन्वेस्ट प्रॉपरली, अच्छा खरीदो. इफ यू आर बाइंग अ सक्शन, बाइंग अ कंप्रेसर, एक बार खरीदो, अच्छा खरीदो. डोंट बाय थिंग्स कि यार अभी पैसा कम है, अभी ये खरीद लेता हूँ, देन आई विल बाय अ न्यू आफ्टर 5 years एंड आई विल हैव मनी. डोंट बाय राइट नाउ. अभी आपको बेसिक्स जो क्लिनिक स्टार्ट करने के लिए चाहिए वो 5 चीजें खरीदो, बट वो अच्छी क्वालिटी की खरीदो. और फिर I followed one thing in my life that I follow it still today. There are 2 things that I do every year. I invest on myself. How do I invest on myself? I do 2 or 3 good workshops anywhere, whether it is in India or globally, कहीं पर भी. उससे क्या होता है, मेरा डेवलपमेंट होता है, मैं सीख रहा हूँ. सेकेंड, आई इन्वेस्ट ऑन माई क्लिनिक एवरी ईयर. हर साल में 2 या 3 नए इक्विपमेंट्स खरीदता हूँ. सो इसी तरीके से अब आपने, आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल एक साथ ऐसे बहुत सारे इक्विपमेंट्स खरीद ले. दिस इज टू प्रेशराइज यू. ऐसा नहीं. आपने 2 नए कोर्स करे, 2 नई चीजें सीखी, उससे रिलेटेड आपने इंस्ट्रूमेंट्स खरीदे जो आपको यूटिलाइज हो सकते हैं. अब आपने क्या करा, उनको यूज करा साल भर, नेक्स्ट ईयर आपको लगा कि अब मेरे को 2 नई चीज सीखनी है, बाय 2 न्यू इक्विपमेंट्स. तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, यू आर नॉट ओवरबर्डन्ड आल्सो विद ऑल द न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर. आप सीख भी रहे हो और उसके हिसाब से इक्विपमेंट्स भी सीख रहे हो, एंड दीज आर योर बिगेस्ट एसेट्स दैट विल हेल्प यू टू ग्रो इन योर लाइफ. इससे सबसे ज्यादा ग्रोथ मिलेगी. दिस इज हाउ आई हैड डेवलप्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. सीखो और इन्वेस्ट करो, वो आपको और कमाने में हेल्प करेंगे, अर्न करने में हेल्प करेंगे, थ्रू विच यू कैन अर्न फर्दर, यू कैन इन्वेस्ट फर्दर ऑन योर क्लिनिक. पहले दिन ही बहुत सारी चीजें नहीं खरीदनी. Thank you, sir. This is real input. And the second, how to get initial footfall in your clinic. See, the most important thing is the trust of your patient. अगर आपके पास दिन में एक नया पेशेंट भी आ रहा है, just see that each and every patient coming in your clinic is someone whom you have to satisfy fully. है ना. आपको वो पेशेंट का ट्रस्ट बनाना है. वो कैसे बनाना है आपको, सी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द हाउ यू कम्युनिकेट विद योर पेशेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. जब पेशेंट आता है ना, हमेशा अ गुड डॉक्टर इज द वन हु लिसन्स टू देयर पेशेंट. अगर आप अपने पेशेंट की प्रॉब्लम को समझ नहीं रहे हो ना, सुन नहीं रहे हो, सो यू नीड टू बी अ गुड लिसनर. अगर आप सुन रहे हो तो आपका पेशेंट
आप आधा तो ठीक आपका पेशेंट वैसे ही हो जाएगा व्हेन यू कम्युनिकेट विद योर पेशेंट। फिर वॉट एवर यू आर डूइंग, फर्स्ट प्लीज मेक श्योर कि यू आर गुड इन दैट। चाहे वो रूट कैनाल है, फिलिंग है ना, आप नाम सी, डोंट कॉम्प्रोमाइज विद द क्वालिटी ऑफ द ट्रीटमेंट, डोंट कॉम्प्रोमाइज विद द क्वालिटी ऑफ द मटेरियल। मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं, आप अपने पेशेंट को सपोज एक फिलिंग कर रहे हो, क्लास 2 फिलिंग कर रहे हो, पहले लर्न अ प्रॉपर क्लास 2 फिलिंग। क्या आपको अच्छी तरह क्लास 2 फिलिंग करनी आती है? लर्न इट प्रॉपरली। आपको आती है, उसके बाद यूज प्रॉपर मटेरियल्स। क्या आप नॉर्मल एक कोई भी चाइनीज कंपोजिट या कोई भी XYZ कंपोजिट, तो ऑब्वियसली इफ यू आर गुड आल्सो विद योर प्रोसीजर, आपका मटेरियल अच्छा नहीं है, तो आपका प्रोसीजर भी आपको सीखना है, आपको मटेरियल्स के साथ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। आई नो इनिशियली यू वुड से कि पेशेंट को मेरे को चार्ज लेने में, पेमेंट में, सो आई एम नॉट आस्किंग यू टू पुट मनी फ्रॉम योर पॉकेट। Initially, to develop your practice, whatever is your investment, just make sure ki you increase, keep your payments more than that, but not too much, so that initially patient और doctor का जो trust बनता है, you have some football, but please don't compromise with the quality of the treatment, to learn and use good materials. These are the two most important things. दैट्स वेरी राइट सर। एंड सर वन थिंग, आपने भी बहुत सारी स्ट्रेटजीज ट्राई की होंगी लाइक मार्केटिंग टू पुल मार्केटिंग, तो उनमें से आपको क्या लगता है क्या बेनिफिशियल है? बिकॉज ऑन गूगल एंड दैट गेट इट See, I'll tell you one thing. Initial 1 or 2 years, I did a lot of marketing, a lot of marketing. है ना, मैंने पैम्पलेट्स डलवाए न्यूज़पेपर में, I used Google AdWords and a lot of things. just dial and everything. Just dial, yeah, just dial. I didn't find out to be very useful, but Google AdWords I did. है ना, I did SEO for my website. I did pamphlets. So all these things play a very important role initially. Now, see, it can help you in a positive way also and negative way also. So first of all, there never should be over advertisement. Over advertisement is also negative. तो आपको इतना करना है कि पेशेंट्स को पता लगे कि हाँ, देयर इज XYZ doctor in the clinic in the nearby area, and if required the patient can come and communicate and can show you. बट एक्सेस नहीं होना चाहिए, नहीं तो पेशेंट विल गेट कि यार ये तो ब्रांडिंग ही करता है, दिखाते ही है इसका। एंड नाउ इफ द पेशेंट इज कमिंग टू यू, यू नीड टू डिलीवर। अब आपके पास पेशेंट आ गया उस ब्रांडिंग की वजह से, और आपने उसका सही ट्रीटमेंट नहीं करा, और उसका उसका वो उसको फ्रूटफुल नहीं लगा, अच्छा नहीं लगा, दैट वुड बी अ नेगेटिव ब्रांडिंग ऑन योर पार्ट। तो आप ब्रांडिंग तभी स्टार्ट करो जब आप यू आर वेरी श्योर कि हाँ, आई एम रेडी फॉर दिस। And if a patient comes to me, whether it is with the quality of the treatment, with the quality of the service, I can give it properly. So, but branding is very important for initial 1 to 2 years. एक टाइम के बाद when you have started settled, I should say branding बंद नहीं करनी है, but you should dilute it. You should become slightly slower so that वो over exaggerated नहीं दिखे, बहुत ज्यादा नहीं दिखे. डेफिनेटली सर। एंड सर अलॉन्ग विद सर पेशेंट आ भी गए क्लिनिक पे एंड ट्रीटमेंट वगैरह एक्सप्लेन हो गया, एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है फॉर अ यंग डेंटिस्ट, पेशेंट बार्गेन करता है। इफ अ पेशेंट इज इन्फ्लुएंसर और इन्फ्लुएंसर इन द सोसाइटी लाइक सम IAS IPS और सम अदर गवर्नमेंट पोजीशन और योर रिलेटिव, तो दे डोंट पे यू देयर मतलब योर ड्यूज, तो उसको कैसे हैंडल किया जाए? बिकॉज आई नो यू हैव डन इट वेरी वेल। See, we have kept one thing very clear in our clinic, and charges are fixed for anyone, whether it is any NRI patient, whether it is any patient in from a city, anyone, and our charges are very fixed, and we communicate our charges before the start of the treatment to each and every patient. और communicate करने के बाद उसको हम prescription पे पीछे पूरा एक एक चीज लिखते भी हैं, and we make sure, suppose मैंने एक root canal start किया, if my root canal charges are suppose 5,000, okay, so if I have started that root canal, my patient will pay for that root canal completely at before the start of the treatment. अब सपोज उसी पेशेंट के क्राउन लगना है, तो जिस दिन मैंने क्राउन कट करा रिसेप्शन पे, उसी पेशेंट का क्राउन कटिंग का पेमेंट पूरा हो जाएगा. सो डोंट कीप द बिल्स पेंडिंग. एंड में पेशेंट को क्या लगेगा कि यार मेरे को 20,000 देने, डॉक्टर से 3,000 का बार्गेन. पेशेंट को पहले ही सब क्लियर करो, और जो जो ट्रीटमेंट करते जा रहे हो उसका पेमेंट हाथों हाथ कराते जाइए. डोंट कीप इट पेंडिंग, अदरवाइज एट द एंड द पेशेंट. एंड वन मोर थिंग, नेवर, being a doctor, we are not businessmen, so and you don't look good asking for money. It's not your work. Train your reception
and train your reception to take all the payments, keep all the records of the billing, because this is something I cannot do it and you cannot do it being a doctor. So this is something very Very much important. right sir, very much right. And I think this is a very practical strategy कि ऐसा भी नहीं है कि पूरा पेमेंट इनिशियली हो रहा है, बड़ा पेमेंट करना पड़ रहा है पेशेंट को, वो पार्ट में कर रहा है पर ट्रीटमेंट से पहले कर रहा है, और पेमेंट करने के बाद उसका फोकस केवल ट्रीटमेंट पे है। ऐसा नहीं कि आप पैसे कम करवाने हैं तो नखरे निकालते हैं। हाँ, यस, वेरी ट्रू। along with sir मतलब it's a forehand dentistry and as you rightly recommended कि you need a good reception also, तो staff कैसे मैनेज हो? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 25-26 साल के लड़के या लड़की से स्टाफ कैसे मैनेज हो? देखो, सी, you need to be a leader, because anyhow if you're opening a clinic, if you're working in a clinic, being a doctor also, you're also a businessman, because clinic is also your business, है ना? So you need to keep staff, and I always say that you need to have good number of staffs with you. Suppose if you have a one chair clinic also, I would say you need at least 2 or 3 staff. One should be a reception. Your assistant cannot be a receptionist also. First of all, you need a reception a separate, because रिसेप्शन का काम बहुत अलग है। रिसेप्शन आपके सारे अपॉइंटमेंट्स में से, आप बोलोगे मेरे पास इतने अपॉइंटमेंट्स ही नहीं, बट कभी तो होंगे, तो पेशेंट से कम्युनिकेट करना, आपके आपके सारी बिलिंग्स करना, प्लस आपका एक असिस्टेंट, है ना? एंड आई वुड ऑलवेज से कीप वन असिस्टेंट एक्स्ट्रा, बिकॉज सपोज एक असिस्टेंट आपका छुट्टी पे गया या छोड़ के चले गया, देन यू वुड बी हैंडीकैप्ड। एंड ट्रेन योर असिस्टेंट्स इन सच अ वे जैसे आप चाहते हो आपका क्लिनिक रन करे, बिकॉज आज मैं अपनी क्लिनिक में इंस्ट्रूमेंट्स मेरे को नहीं पता कहां पर क्या है, कैसे क्या है। आई हैव ट्रेन्ड माय स्टाफ इन सच अ वे, और सपोज एक स्टाफ छोड़ के आता है, नेक्स्ट स्टाफ आता भी है, तो पुराना स्टाफ उस नए स्टाफ को ट्रेन करता है। सो आपको अपने स्टाफ को इतना इक्विप्ड करना है, और आपकी क्लिनिक कितना अच्छी तरह रन करती है डिपेंड करते हैं आपके स्टाफ, आपके असिस्टेंट्स कितने ट्रेंड हैं। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। So sir, along with this, the key question is how to develop that trust in your patient, मतलब why your patient trust you actually? सीधा सबसे इंपॉर्टेंट चीज ट्रस्ट का क्या है? कीप थिंग्स क्रिस्टल क्लियर। नाउ डू एन एथिकल प्रैक्टिस। आई टेल यू एन एग्जांपल। कई बार हमारे पास पेशेंट आते हैं कि सर है ना, मेरे को, मैं किसी क्लिनिक पे गया था, उन्होंने रूट कैनाल बोला या फ्लैप सर्जरी बोला। वी सी एंड लॉट ऑफ टाइम्स वो सिर्फ फिलिंग होती है, या फ्लैप की रिक्वायरमेंट नहीं होती, नॉर्मल डीप क्लीनिंग की रिक्वायरमेंट होती है। आई टेल माई पेशेंट दैट you don't need unnecessary procedures. I'll do a very simple procedure for you, and that is what is required. So this is just an example. Most important thing is do an ethical practice. सिर्फ अपने पेशेंट के लिए वही करिए जो रिक्वायरमेंट है। Over a period of time, if you're working in an ethical way, you will develop that trust with your patient, and in the market this would be a message that XYZ doctor is there, he is doing good work and ethical work, and his work is very good. तो आपको अच्छा काम करना है तो सीखते रहो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एथिकल प्रैक्टिस करनी है, पेशेंट का ट्रस्ट बनने का सिंपल फैक्टर। आज आप ये सोचो, आज मैं भी अगर पेशेंट बन के किसी डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, वो डॉक्टर मुझे अच्छी तरह अपने ट्रीटमेंट को समझा रहा है, पहली चीज है ना, तो मेरे को समझ में आ गया है डॉक्टर बहुत अच्छी तरह समझा रहा है, मुझे मेरी बीमारी समझ में आ गई। सेकंड, वो जो भी कर रहा है मुझे सब बता के कर रहा है, एंड एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर। पेमेंट भी उसने मेरे को सब कुछ बता दिया, एवरीथिंग हैज बीन डन अकॉर्डिंग टू व्हाट हैज बीन टोल्ड। यही पेशेंट को चाहिए। तो पेशेंट ट्रस्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, चाहे आपको अपनी प्रैक्टिस बिल्ड करनी है या अपनी प्रैक्टिस को ग्रो करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इन्हीं तरीके से आएगा। तो कीप थिंग्स सिंपल एंड एथिकल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। Very much right sir. And so now one thing I will ask about branding, and as branding, because I personally feel that in a very short span of time you find a stage जो कि डॉक्टर सोचते हैं कि 15-20 साल बाद मिलेगा, and you are a speaker with an implant company, very reputed one, you are representing them in national and international forum. So what do you think? मतलब it's like कि you attach with the company as a speaker, then your fraternity find you as a good doctor, or you are a good doctor, then a company will get you as a speaker, because most of the doctors are in touch with me कि Anna, can we be a speaker of the company I am representing, and in a very young age, and they might be thinking कि with that they can create a persona. So how does it work actually? देखो, एक लाइफ में एक चीज, किसी भी चीज का शॉर्टकट नहीं है ना? वॉट आई हैव लर्नड इन माई लाइफ, यू कैन नॉट रीच टू दिस लेवल डायरेक्टली। हर चीज यू नीड टू गो स्टेप बाय स्टेप, है ना? आज मैं अपने आप को सोचता हूँ, आज से मैं 8 साल पहले भी मुझे लगता था कि आई वॉज डूइंग गुड,
है ना. But now when I compare myself from what I was 8 years before and today, I feel a massive difference in me as a person, as a clinician also, and as a human being also. Yes, sir. Yes. Okay, so suppose like to be a speaker for a company is a totally different thing. सबसे important चीज है कीप लर्निंग, है ना. आप जैसे जैसे सीखते जाओगे आपको ये लगता जाएगा कि हाँ, इफ सपोज विद लेट्स टॉक अबाउट इम्प्लांट्स, ठीक है. इफ आई नो आई वांट टू एक्सेल इन इम्प्लांट्स, so I'll learn about implants, I'll do those procedures, and I'll see how my cases are working. I'll keep a track, okay, and I'll keep on learning, and I'll keep on excelling. I'll keep on listening to a lot of people, and I'll keep on applying new things, buying new equipments, buying latest technology regarding that. But first I need to train myself in such a way कि मैं किसी और को सिखा पाऊं. पहले मैं खुद तो सीखूं. तो आपको उस लेवल तक पहले पहुंचना है. दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. नाउ सी आई नेवर बिलीव कि आपको किसी भी एक कंपनी को जाके बोलना है मुझे स्पीकर बना दो, एंड नो कंपनी विल मेक इट. दिस इज अ sheer truth. No company will do it. Definitely. If you are good now, the companies will directly come to you for a speaker or for anything. And speaker and everything is your passion. Like teaching is my passion. I do teaching just to take care of that passion because I love interacting with people and other doctors and sharing my knowledge. That's a different, totally different perspective. But सबसे important है आप पहले सीखो, अच्छा बनो और सीखते रहो और अपने आप को उस लायक बनाओ. अपने आप people will come to you to learn, to ask you to share your knowledge. तो sharing anyhow helps you to further grow further. ये मेरे को ऐसा लगा because जितना I am taking lectures, I am trying to share my knowledge, मैंने देखा कि I am recording my cases, I am also upgrading, and I am also increasing my knowledge. This has also helped me to grow a lot. Definitely. तो सबसे important है keep learning. That's the most important thing I have seen in my last 10 years of journey. So, if you have shared a lot of things and very genuinely, very truthfully. One more thing I would like to ask you, if you would like to answer, what is your view on visiting practice in the start and after establishing yourself? See, I had done consultations before, not a lot. I see. It depends. How do you want to develop your own brand? Suppose अब मैं अगर एक consultation के लिए महीने में 8 दिन, so it means you are off your clinic 8 to 10 days. See, initial 5 साल, if you want to develop your practice, you need to sit in your clinic चाहे patient है या नहीं है. That's the most important thing. ओके, बिकॉज सी हो सकता है किसी दिन एक भी पेशेंट नहीं होगा आपके पास, लेकिन जिस दिन हुआ और आप नहीं हुए क्लिनिक पे, देन दैट मैसेज विल गो दैट डॉक्टर नहीं है क्लिनिक पे. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इनिशियल 5 years 6 years I would say that you need to sit in your clinic. Now regarding consultations, see, one thing I would say, if you are doing consultations, do it, but never compromise your treatment planning, the quality of the treatment, the quality of the material that you want to use. If the consultant doctor do not want you to practice according to how you want to do it, I would say please don't go for consultations, especially at those places. If that consultation for consultations, if you're going at a practice that is good and that is allowing you to increase your horizons, allowing you to use different materials and techniques that you want to use and try, it's very good, you can do it. There are a lot of good clinics that do that. So you need to see where you're going for consultations. Is it fruitful, or is it just that you're doing it temporary just because you're right now your financial status is not good? So that's not a good criteria to select good consultations. Thank you, sir. Sir, thanks for sharing your time, giving your time. Thank you so much, Ankit. Thank you so much. And I'm sure there was a lot of things. I found some things which are very useful to a young dentist, and if I meet to a young dentist, I will share points from that. And you can watch this video on Ayushi Density's YouTube channel and Sir's channel and follow the things, and you can share it with your friends whom you think it could be useful. Thank you. Have a nice day. Thank you.